गाइस, इस साइड में मैंने रखे पूरे अपने गाउन्स, लहंगा, फुल गाउन्स वैसा वाला। और यहाँ है हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरपीके स्क्वायर वर्ल्ड। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और इस वीडियो को दीजिए बिग थम्स अप। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपना न्यू परचेज्ड कबोर्ड, अलमारी, कुछ भी आप लोग कह सकते हो इसको। तो ये देखिए गाइस, यहाँ एक है शेल्फ और इसके अंदर ये सा वाला है। ये देखिए 4 शेल्फ्स हैं और 2 ड्रॉर्स। तो मेरी मम्मी ने एक बार क्लीन कर दिया इसको, फिर तो भी एक बार कपड़े रखने से पहले इसको हम लोग क्लीन कर देंगे ड्राई टॉवल या क्लॉथ से। उसके बाद ये न्यूज़पेपर भी आप लोग बिछा सकते हो, कैलेंडर पेपर भी बिछा सकते हो। तो अभी मैं टाइम लैप्स करूँगी इसका, उसके बाद मैं आपको बाद में बताती जाऊँगी मैं और क्या क्या करने वाली हूँ। तो चलिए क्लीनिंग शुरू करते हैं। अभी ये क्लीन तो हो चुका है, पूरा कबोर्ड मैंने फास्ट करके क्लीन तो कर दिया। अभी इसको हम लोग अरेंज करेंगे, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड करेंगे। तो अभी इसको हम लोग अरेंज करेंगे, फिर से अभी आने वाला टाइम लैप्स। तो चलिए शुरू करते हैं अरेंजिंग का काम। इस साइड में मैंने रखे पूरे अपने गाउन्स, लहंगा, फुल गाउन्स वैसा वाला। और यहाँ है 2 मेरे चूड़ीदार, ग्रीन और ब्राउन, उसके 2 लेगिंग्स, उसके बाद ये वाला एक हुडी, उसके बाद ये वाला एक टी शर्ट और ये वाला एक टी शर्ट, उसके बाद ये वाइट कलर ब्लू
और ग्रीन वाला ये डार्क ब्लू, तो ये सब मैचिंग मैचिंग करके मैंने रखे हैं। तो आप लोग लास्ट व्यू देखिए कैसे दिखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।